फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and a very warm welcome to all our viewers. 17 years of wait has officially ended for all the RCB Royal Challengers Bangalore fans. Isala Cup naam their term we have been hearing for 17 years now. Every year RCB fans hope they'll have the trophy this year, but to no avail. Finally, the RCB women's team has given the Royal Challengers Bangalore franchises their first ever trophy across WPL and IPL. And what a day, what a night rather this is for the RCB fans. The whole of Bangalore, I'm pretty sure they'll be celebrating till sunlight tomorrow. There'll be huge celebration in the city of Bangalore. This is their first ever trophy. Well, with me, I have Soumya Kapoor and Taus Rizvi, and we'll discuss the match, we'll discuss the win. Soumya, a huge RCB fan yourself. Finally, a trophy comes home for the RCB franchise, for the women's team, but across both the genders. As I said, RCB men's have never won a Yeah, trophy, and this is the first time that Royal Challengers Bangalore, as a franchisee, have a trophy with them. What do you have to say? How was the atmosphere in the match? I mean, as I've been talking about the atmosphere, Kanav, this has been an amazing journey for the RCB fan in this particular tournament. You know, they started off well, lost to a couple of games, won a crucial one, lost a couple जहाँ पे वो थोड़ा सा tricky हो गया situation, permutation combinations लगने लगे, and then that eliminator against Mumbai Indians, which was turned around totally uh, in the second last over, in the last 3 overs of the game. तो अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस उसके बाद जो फाइनल में किया है, एज आई वाज सेइंग कि कहीं ना कहीं ग्लिचेस थे जो थोड़ा सा ट्वीक करने की जरूरत थी आरसीबी को, एंड दे डिड दैट. शेफाली स्टार्टेड रियली वेल. शी गॉट the opening stand was almost of 61, more than 60 runs in first 6 overs. उसके बाद जो कंटेन करा है आरसीबी ने, hats off to their spinners. Shanka Patil is a star in making. What a performer, steps up on the big occasions. That is something which I really like about her. She has the ability to step up on the big occasions. She did that in the in the eliminator. She did it in the finals, and what a victory, man! What a victory! What an atmosphere! People are now have started to come out of the stadium of the ground, and they have been thoroughly supporting the RCB team. RCB needed 3 or 4, if I'm not mistaken, and there was a bit of वो थोड़ा सा होता ना कि शायद कहीं प्रेशर ना आ जाए, अगर विकेट निकल जाए या एक और डॉट बॉल ना निकल जाए. And there was chance of RCB from all around, and they lifted the team, and then उसके बाद जो एक चौका आया, that was game set match. So what an atmosphere! I just love the way the Delhi crowd has welcomed WPL, the way they have welcomed all the teams. They are showing the same love they show to the men's cricket team as well. What an atmosphere! What an experience! It is just amazing. And as an RCB fan, it's a great feeling, to have that trophy in the cabinet finally. And the men's team can also take inspiration from them. And who knows? We have a second one in the bag in this year. Well, that sounds too good to be true, Soumya, as an RCB fan. But I'll come to Taus. But Taus, 17 years of wait and RCB finally has a trophy. What's your reaction to this? Superb. I mean, Delhi just gifted the match to RCB. I mean, they were supposed to start. They got a great start, man. 64 for no loss. What the hell was Shefali Verma doing? What was she thinking? I mean, I don't know. After getting that start, I mean, I told you in the first innings itself, before in the pre-match, Yeah. her role will be crucial, and she got to a good start. But आई मीन ये बहुत सीखना है इनको, ये लड़कियों को, खास करके जो यंगस्टर्स हैं उनको, और बाकी आई मीन श्रेयंका पाटिल डेफिनेटली दीज गर्ल्स हैव कम अप वेरी वेल, बट देन अ लॉट ऑफ पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, a lot of youngsters have to learn from their mistakes having played for a long time. मैं I'm sad about the part that she wasted a great opportunity. फिर again like Sophie Molinix, I think that turned the game completely. Completely. 3 wickets in 1 over of two important players for Delhi Capitals. Lovely. I mean, and मैं तो चाहूंगा यार विराट कोहली एंड कंपनी स्मृति मंदाना को बुलाएं और एक पेप टॉक दिलवाएं मैं आईपीएल के पहले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैंने ये भी
ट्वीट किया है और एक बहुत ही अच्छा मैंने फोटो बनाया, आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि फैब हाउस भाई, ये फैब डुप्लेसी एंड आवाज कंपनी, सुनाई दे रही है? फैब डुप्लेसी, मैं बोल रहा हूँ फैब डुप्लेसिस एंड कंपनी ये स्मृति देखिए, मंदाना को बुलाए, अब फैफ है कैप्टन। या तो Now, ये चीज है, मैंने नहीं, बट इम्पोर्टेंट ये है कि भाई आरसीबी जीत गई है, 15 साल का वेट, ये तो डब्ल्यू वुमेन्स क्रिकेट ने कर दिया है, वुमेन्स क्रिकेट टीम ने आरसीबी की, कि भाई दे हैव ब्रोकन द जिंक्स। इनका दूसरा या साल में ही जिंक्स टूट गया, ये तो 15 साल से खेलते आ रहे हैं, तो देयर शुड बी नो कंपैरिजन एट ऑल। तो यहाँ पर हाँ, बट आई वांट टू नो सौम्या फ्रॉम यू एग्जैक्टली यार, 111 रन का टोटल 20वें ओवर तक गया है, या थोड़ा मुझे समझ में you नहीं know, आया। so what I observed, Tausbhai, Ellis Perry and Smriti, the fielding was really good from Delhi Capitals. It was good. They were bowling in good areas, but there was no sense of hurry, I would say. Smriti और Ellis दोनों के साथ में कोई hurry नहीं लग रहा था. So probably that was the thing that it took time, and because the target wasn't that much. But हाँ, वो थोड़ा सा शायद tricky हो जाता बाद में, अगर वो एक आध डॉट बॉल और या एक आधा विकेट निकल जाता उस समय. So yeah, I understand what point you are trying to make here, but उतना हरी था नहीं, उतना प्रेशर था नहीं. They were looking decent enough, comfortable enough to chase this one. वो स्मृति ने जो शॉट खेला, I wouldn't have liked, as if I am the coach, I would still go to her and ask her, why the hell did you play that shot? It wasn't required, because the margin between the balls and the runs was 2 or 3, if I'm not mistaken, at that point of time. तो बहुत ज्यादा मार्जिन था नहीं, उसका जरूरत नहीं था. सिमिलरली जस्ट टॉकिंग अबाउट दिल्ली कैपिटल्स बैटिंग, यस, शेफाली ने, आई अंडरस्टैंड कि उसने गलती करा, वो शॉट लेने का जरूरत नहीं, बट दैट शॉट वाज ऑन. वो जिस जगह पे वो, दैट वाज इन द स्लॉट बेसिकली, वो सीधा हाथ में चला गया, दैट इज अ डिफरेंट केस. बट जमीमा, you just playing your second ball, second delivery of the match. I mean, why are you going for that slog? And I don't understand why the Delhi Capitals were trying to slog everything. They lost wickets, they lost, they were trapped in front of the stumps while trying to slog. They were cleaned up while slogging. They were caught while slogging. So slog से खेलने का इतना जरूरत था क्या? Because there was not much of a pace in the bowling. आपको कुछ तो हेल्प चाहिए ऑफ इट, राइट? बट वो बहुत हेल्प था नहीं, एंड यू जस्ट ट्राई टू score runs quickly और उसमें अपने विकेट्स दे दिए, and there was no partnership after that. So yeah, I mean that was a problem with the application more than Shefali. I'm really disappointed with Jemima. Yeah, Tausif. No, no, but did they succumb to pressure? I mean, because the whole stadium was almost filled with RCB fans. So was there any kind of pressure? मुझे लगता तो है, क्योंकि जहां जहां देखो वहां आरसीबी के फ्लैग थे, और मोस्टली बिकॉज ऑफ ब्रांड विराट कोहली. No, but yeah, you're right. RCB fans say, but when Shefali was taking on the RCB bowlers, there were chants of her, like they were going crazy. The DC fans were going crazy. तो ऐसा नहीं था कि support totally RCB की तरफ था, पूरा गिरा हुआ था. We did realize बाद में कि मैंने पहले जब बात करी थी तो मेरे को सिर्फ आरसीबी फैंस दिख रहे थे, बट द मोमेंट आई एंटर्ड द प्रेस बॉक्स एंड मैंने उसको ग्राउंड में देखा, वो एटमॉस्फेयर, तो दे वर, आई वुड से इक्वली पॉइज्ड फैंस, बट बहुत फैंस थे डीसी के. तो व्हेन शेफाली वाज गोइंग हैमर एंड टॉन्ग्स, तो प्रॉपर उसको सपोर्ट मिल रहा था, प्रॉपर चीयर मिल रहा था. So this crowd was all about celebrating a wicket and celebrating a boundary, no matter who scores it, who does that. इट इज जस्ट दैट वो एंड में जाके आरसीबी के पास वो हमेशा हर जगह एज होता है, तो उनको वो एज मिला फैंस की तरफ से, एंड देयर वाज मोर, दे वर चीयरिंग मोर फॉर आरसीबी, दैट्स इट. तो प्रेशर पे सकम नहीं करता है, क्योंकि उनके पास सपोर्ट था, डीसी के पास इनफ सपोर्ट था. Yeah, but it looked like what rather the social media was also saying that this इतना लास्ट तक ले जाने की जरूरत नहीं थी, एक इतना बड़ा. Yeah, agree to that. Yeah, Agree to that, but उसका I won't, I won't take that. वो समय में, as I said, मेरे को समझ आ रहा है कि where this point is coming from, कि यार अगर एक डॉट बॉल हो जाती या अगर एक विकेट और निकल जाती तो शायद वो कहीं ना कहीं ट्विस्ट हो जाता. बट yeah, these are professional cricketers, they understand that. और जहां दो बैटर्स को लगा कि यार बॉस थोड़ा सा बाहर जा सकता है, it took the chances, they started to rotate the strikes. So ऐसा नहीं है. Yes, Smriti's shot was really bad one. I would say that. I would be very blunt about that, because she was also looking good. She was scoring runs through the boundary. She was finding gaps. She was getting singles. Ellyse और उनके बीच में एक पार्टनरशिप अच्छा हो रहा था. तो शॉट में जरूरत था नहीं. But yeah, I mean, and that has been a problem with the Indian players, I would say. But They give away I wickets. think they took it
they took it. They took. It was a conscious decision to take it deep because मुझे लगता है हाँ. there could be a fair factor कि यार हम्म. यहाँ से मिस हो गया कि फाइनल तक पहुंचे. बहुत ही कम रेयर रहता है कि यार आरसीबी का कोई लेगेसी है कि यार फाइनल तक पहुंच के आप इतना ये नहीं कर पा. अनिल कुंबले के टाइम पहुंचे थे फाइनल के अंदर, फिर वो भी हार गए थे. सो आई थिंक देयर वाज Right. समथिंग गोइंग अराउंड इन द माइंड कि एटलीस्ट आप विकेट सेव करके रखो, बाद में आप आखिर तक भी जाओगे क्योंकि टोटल हम्म. इज लो. बट देन वो मुझे लगता है फेयर फैक्टर एज वेल एज प्रेशर दैट केप्ट देम उतना उतना दैट फेयर दैट फैक्टर सॉ देम था वेंट उसमें, इनटू द उतना फेयर फैक्टर था उसमें दिखा नहीं ऑनेस्टली. इन यहाँ पे ना आरसीबी के कैम्प में उतना दिख नहीं रहा था. इट इज अरे जस्ट बट दैट कि वो शुरुआत देखिए ना 39 फॉर 31 बॉल्स. आई मीन yeah. कोई भी नॉर्मली स्मृति मंदाना So 39 they scored 25 दैट in हाउ the यू प्ले 20 टेस्ट. एलिस 25 पेरी 39 बॉल in the 35. first six. So they scored 25 in the first six if I'm not mistaken. कुछ ऐसे ही स्कोर था, बहुत ज्यादा उन्होंने नहीं किया था 5 6 ओवर में. So yeah, that was I think that was a plan to save wickets, to have wickets in hand, क्योंकि एक आधा चौका एक आधा बाउंड्री तो कोई भी लगा सकता था. एंड मार्जिन जो का था ना वो कभी भी उतना ज्यादा नहीं था बैट बॉल्स और रन्स के बीच में. 2 3 इधर हेयर एंड देयर वो था. हाँ, आई अंडरस्टैंड कि अगर आपको 4 बॉल में 3 चाहिए और अगर आपकी वहां एक विकेट निकल जाती, एक नया बैट्समैन अंदर आ रहा है जिसको 3 में 3 करने, तो वो थोड़ा प्रेशर सिचुएशन हो जाती है. बट ओके, दैट्स हाउ द गेम वर्क्स यार. और ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं और इनको समझता है कि वो जो परमुटेशन है वो समझते हैं ये लोग. बट Absolutely, कनव and का भी ओपिनियन yeah, होना चाहिए इस पे कि आरसीबी जीत गई यार. कनव इज अ बिग मेरा, आरसीबी फैन. हाँ, कनव कनव ऑफ कनव मैंने कोर्स. तो बोला है कनव. कनव आरती ही कनव वाज लाइक कनव ने अभी सेलिब्रेटिंग. कनव ने अभी मोनोलॉग से स्टार्ट तो किया है. मुझे लग रहा था रोना दे बस ये. actually, what I was talking with some of my friends is that usually you get a blank when something like this happens. You have been waiting for something for 17 years, and when this happens, you don't know how to react, how to digest. But I'm super happy with whatever Yeah. has transpired today, especially with the Royal Challengers Bangalore. But I mean, the girls and the debate here is, can we call it a 17 years of wait? Should we attach the men's baggage with the women's team? Because the women's RCB team have won their trophy in the second season itself. They have not waited for 15 years. Is this right if we are connecting the So 15 years and putting this on our women's team? ओके, भाई आप जवाब दीजिए, देन आई विल आंसर दिस. नहीं बिल्कुल भी नहीं यार. बिल्कुल मेंस का अपना अलग है. दे शुड कीप इट टू देमसेल्फ यार. उनको अपना खुद का. दिस इज द सेकंड ईयर. कैन यू इमेजिन सेकंड ईयर? व्हाई शुड वुमेन्स टीम कैरी मेंस बैगेज? वो अपना डील करें. ये अपना 15 साल से उन्होंने क्या किया है? आई मीन नथिंग. दे हैव डन नथिंग डिस्पाइट हैविंग अ विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल. आई मीन यू नेम ईच एंड एवरी प्लेयर. दे हैव हैड द ग्रेटेस्ट ऑफ द प्लेयर्स इन देयर लाइनअप, but they haven't achieved what women have. So I think they should do one thing. They should seek inspiration. What exactly they did? They should invite Smriti Mandana for a pep talk जहां पर विराट कोहली भी ऑडियंस में रहना चाहिए. No, जहां पर actually, विराट what कोहली भी what ऑडियंस में what रहना I चाहिए. have Taus, what I have just tweeted is on 19th of March, RCB has an unbox event. You call the girls team there with along with their trophy. You make them take a lap of honor throughout the Chinnaswamy Stadium. This is important for the Absolutely. women's team, and this is important for the fans because the RCB unbox event has to have the trophy, RCB's first ever trophy. But yeah, coming अच्छा, back to the इनफैक्ट question, Taus, इनफैक्ट you were saying. ये भी तुम ये भी काउंट करो कि यार ये लेडीज पे बर्डन ऑलरेडी था क्योंकि आरसीबी का प्रेशर लेके आ रहे थे पिछले साल से ही. Yes, exactly what एक्सपेक्टेशन I was asking. बर्डन. आई मीन 15-14 साल से ये So पिच नहीं किया तो I'll they had answer. extra Okay. burden. And now this year when they got an opportunity, when they won this title, I mean ये उनका बैगेज क्यों लेके चल रहे हैं मेंस का? Why? I mean this should be completely different. और यहाँ पर उन्होंने एटलीस्ट एक गाइडिंग फोर्स तो बन के दिखा है, विच इज गुड, विच इज अ फील गुड फैक्टर. तो अभी यहाँ से Yeah. मुझे लगता है कि यार ये दोनों ये सीख करना चाहिए, ना कि यहाँ से एग्जाम्पल. तो So आई एग्री कंप्लीटली कि अनबॉक्सिंग इवेंट में I'll इनको just लैप कराना चाहिए और पूरा एक सम्मान नेक्स्ट लेवल का देना चाहिए जो डिजर्व करते हैं. Yeah, Soumya. so what I was saying, बैगेज वर्ड नहीं यूज करते, ठीक है, लेकिन एक एक if you talk to the fans there, okay, the RCB fans, I'll keep it that way. तो होता क्या है कि when they are talking about the women's team also, they talk about Smriti Mandhana, Ellyse Perry, then you know they come to Virat Kohli factor, right? They come to the men's factor.
तो माय पॉइंट इज कि वो जो एक फैन बेस है ना, वो बेस कहीं ना कहीं वो मेंस क्रिकेट से बनता हुआ इधर पे भी आ गया है, दैट हैज डबल्ड अप। तो वुमेन्स क्रिकेट का एक अपना फैन बेस है, विमेन्स जो हमारी आरसीबी की टीम में जो प्लेयर्स हैं उनका एक फैन बेस है, विराट का अलग फैन बेस है, एबी का अलग फैन होता बेस होता था, गेल का अलग होता है, जो जिन्होंने भी आरसीबी के लिए खेला है। तो ये सब क्लब हो गया। ओके, नाउ दिस हैज एडेड अप, and RCB as a team, as a franchise, has so many fans that we won't call this as a baggage, but you can call it that it was a 17-year-old long wait that has come to an end as an RCB fan. Yeah. This is how I would put. So yeah, our women's team has put the end to that trophy drought for RCB. This is Yeah. how I will sum this up. Yeah. But also that means that they would have had the baggage also, because when the word I won't say RCB baggage comes. क्योंकि I won't say baggage क्योंकि baggage यार देखो क्या होता है, या तो लास्ट बैगेज दिल्ली कैपिटल्स पे 2 फाइनल हार गए अभी लगातार, वो लोग पिछले साल फाइनल में भी नहीं पहुंचे थे, तो उतना उतना दे वर प्लेइंग द फर्स्ट फाइनल, उनको थोड़ा एलिमिनेटर किसी तरीके से वो निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पे दे as soon as they stepped onto the field they were looking good, they were looking steady, they had a plan in place, so everything was good. So वो बैगेज नहीं बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आए एंड gave the fans shared delight. नहीं दिमाग पे प्रेशर रहता है, सी देयर विल बी प्रेशर बिकॉज आई मीन सोशल मीडिया वहां पर ओपिनियन दे रहे अपने आरसीबी के ऊपर, आरसीबी के फैंस या उनके विराट कोहली के, या पीपल हु आर अगेंस्ट ट्रोलर्स, वो एक प्रेशर डालते हैं कि भाई आरसीबी नहीं, या वुमेन्स का। फिर मीडिया सवाल पूछता है, देखिए चाहे आप कितना भी प्रेशर ले या नहीं ले, आप खाली माइंड से नहीं जा सकते, एंड दैट इज व्हाट हाउ इट इज, अनफॉर्चुनेटली दैट इज व्हाट हाउ इट इज, एंड यू हैव टू डील विद द प्रेशर। मैं इसलिए बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेकर गए एंड आपने वो ड्रॉट खत्म करा, सो द क्रेडिट इज ऑल देयर, दैट इज व्हाट। वो जो एक 17 साल का ड्राउट था ना, आप उसे बैगेज नहीं बोलेंगे इन लोगों के लिए, लेकिन वो ड्रॉट इन्होंने जरूर खत्म करा, दे हैव गिवन द शेयर पीस ऑफ डिलाइट टू द फैंस, और लाइक दिस इज माय समरी टू इट। और अब प्रेशर रहेगा मेंस टीम पे, अब प्रेशर रहेगा मेंस टीम पे कि यार अब तो जीतो। Exactly what my next question would have been. Not pressure. Let's not use the word pressure here. Will it be a great motivator for the men's team that what we have been trying for the 15 years in our own league? Girls have come in, they have won the second league, and this is kind of a push that the men's team needed. And will this somehow, in any way, Soumya, help the men's team in the upcoming तो ना IPL? पता है प्रॉब्लम क्या है ना, नो मैटर हाउ मच यू टॉक अबाउट द मोटिवेशन पार्ट, इंस्पिरेशन पार्ट, आरसीबी मेंस टीम आई एम टॉकिंग अबाउट, द वर्क स्टॉप्स एट द टीम मैनेजमेंट पिक इन द ऑप्शन एंड द टीम कॉम्बिनेशन दे मेक इन फॉर द मैचेस। वो कोई ना कोई एक कमजोर, एंड आई वुड बी वेरी ब्लंट अबाउट दिस, कोई ना कोई एक लूप होल होता है उस 11 में या उस स्क्वाड के अंदर, जो आपको ना मजबूर कर देता है कि बहुत सब इसे हटा भी नहीं सकते, इसे रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते, और इसे रखना भी पड़ेगा, ठीक है। सो इफ यू रिमेंबर द 2016 फाइनल, आप कितना रन खाए थे, तो क्यों खाने थे वो रन, आपके पास फायर पावर थी, आई अंडरस्टैंड यू पुट अ 140 व्हाइल चेजिंग, लेकिन जो आप टारगेट चेज कर रहे थे आप नहीं कर सकते थे, वो उतना आसान नहीं था, उसमें 60-70 रन और थे, 140 लगाने के बाद 10 ओवर में 60-70 रन और थे, लाइक रफली ये ऐसे ही कुछ इक्वेशन था। तो उसके बाद कोलैप्स हुआ, एसआरएच से आप हार गए, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं वो टीम, जो मेंस क्रिकेट की बात है, जहां तक जो मेंस आरसीबी की बात है, वो कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट और ऑप्शंस में वो लोग क्या करते हैं वो बहुत दिखता है। यहाँ पे आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट्स टू हूसोएवर स्काउटेड श्रेयंका पाटिल, आशा शोभना, जिन्होंने भी इनको स्काउट करा यार, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम, बिकॉज दे आर गेम चेंजर्स, एंड बॉस यू आर गोना सी दीज टू गर्ल्स फ्रॉम आरसीबी, बहुत क्रिकेट इंडिया के लिए खेलेंगे और बहुत खेलेंगे। श्रेयंका इज वेरी यंग, तो बहुत बहुत क्रिकेट होने वाला है और बहुत मैचेस श्रेयंका विल विन यू मैचेस ऑन हर ओन, बिकॉज उसका जो प्लानिंग है, उसका जो एक माइंड सेटअप है, वो थोड़ा आगे चलता है, एक स्टेप अहेड चलता है। दिस इज व्हाट देयर असिस्टेंट कोच आल्सो नोटेड इन द आफ्टर द लास्ट गेम अगेंस्ट मुंबई इंडियंस की, जब हमने इसको स्काउट किया था ना, वी हैड दिस थिंग इन माइंड कि ये अपनी एज से एक स्टेप आगे चलती है एज एन क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। she does a lot of hard work for her cricket, she has a personal coach, she has a fitness coach, she practices on center wickets, she does mass simulations,
तो वो अगर आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं, एंड वो हुआ ना, उसने एलिमिनेटर में आपको इतना इंपॉर्टेंट विकेट निकाल के दिया, उसने फाइनल में आपको 4 विकेट निकाल के दिया, तो दैट इज हाउ, तो दिस इज द बैलेंस, तो दैट इज द बैलेंस विद द वुमेन्स टीम। ये कहीं ना कहीं मिसिंग है मेंस टीम के पास, और इस बार का भी जो स्क्वाड है, बैलेंस बहुत मिस कर रहे हो आप। लेट्स बी अपफ्रंट अबाउट इट, आप बैलेंस तो मिस करने वाले हो, लेकिन हाँ वही है कि अब आपके पास जिस तरीके के कैप्टन है या आपकी जो टीम मैनेजमेंट है, इफ दे आर एबल टू मेक अ बैलेंस टीम आउट ऑफ इट, कंसिडरिंग यू आल्सो हैव एन इम्पैक्ट प्लेयर रूल, तो इट्स ग्रेट। वरना आप वो ई साला कप्तान दे करते रहोगे और कुछ नहीं। So Yeah, it is more about the absolutely. balance, more than inspiration. You will eventually end up analyzing the two teams, कि किसके पास balance ज्यादा है, and that's women's team for now in RCB, Yeah, the balance like in RCB balance today. is Yeah, absolutely the balance is something that eventually wins you trophies. It's not the names, exactly. it's not the superstars, it's the It's team not the balance. inspiration. Inspiration बाद में मिलेगा यार, आपके पास 11 प्लेयर इंस्पिरेशन लेने वाले नहीं है, तो फिर कैसे जीतोगे ना। आई एम नॉट सेइंग Absolutely. आरसीबी के पास इंस्पिरेशन लेने वाले नहीं, इन Yeah, जनरली आई एम टॉकिंग, अगर इंस्पिरेशन यहाँ से लेना भी तो पड़ेगा ना, और फिर उसे इम्प्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, उसे एग्जीक्यूट भी तो करोगे yeah, ना। वो yeah, वो yeah, yeah. वो बहुत बड़ा टास्क है, 14 मैचेस वो करना, फिर प्लेऑफ्स में वो करना, फिर ध्यान रखना कि आप अगर बाई चांस फाइनल पहुंचते हो तो आप वहां चोक नहीं कर रहे हो, तो a Yeah. lot of things attached to it. Yeah, absolutely, absolutely. But talking about one player, Taus here, how important was Ellyse Perry throughout the season? I mean, she has to be the player of the tournament from RCB side at least. Orange cap holder. Eventually, she got better off her own ex-teammate Meg Lanning, ex-Australian captain, former Australian captain, to grab the orange cap. What do you have to say about Ellyse Perry and her WPL season? Yeah, absolutely. I mean, see, these guys, I told you initially, I mean, these guys are professional players. These girls are professional players, whether Australia men's team or women's team. These girls know exactly how to go about it. They are professional. They know what kind of. आज भी देखोगे तो आप अगर ये target हम we were discussing about how it went into the deep despite being a low scoring total. She could have gone, all out. She had the power, she had the skill. She could have hit the, played aggressively, Yeah, but then she played till the end. She knew that there is a responsibility. She took 37 balls, 35 runs. So yeah, she knows exactly how to go about it. So it's a profession. yeah, I mean, these guys know how to play professional cricket, and they have been playing over the years. They are yeah, match winners, and with bat or with ball, whatever responsibility you give them, they will have to play true to their potential, and that is why these foreign players are valued yeah, highly, yeah. whether it's WPL, whether it's IPL, especially Hmm. the Australians and West Indies. I mean, Australians and West Indies, huge difference. वेस्ट इंडियंस प्ले केयरफ्री क्रिकेट, वहां पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो शायद वो एक फिनिश लाइन नहीं करेंगे जो ऑस्ट्रेलियंस करके देंगे, चाहे वो ट्रेविस हेड से लेकर हो, चाहे वो एलिस पेरी हो, या कोई भी क्रिकेटर हो। ऑस्ट्रेलियन में एक ही कोशिश की they'll finish if they are giving whatever opportunities, whatever job they have been given over the time. Hmm. Absolutely. But one visual that is coming out of the stadium is right now Virat Kohli on a video call with the RCB team. As soon as RCB started their मांग celebration, रहे Virat टिप Kohli kept on- टिप्स yeah, मांग रहे हैं, टिप्स मांग रहे yeah. हैं, कैसे जीतो भाई हमको भी बताओ। अभी टिप्स कैसे मांगेंगे ना, अभी तो कैप्टन भी नहीं है, एज अ बैटर तो बहुत कुछ करते हैं। Absolutely. Well, Soumya, as I said, what a last parting words with you. We have talked about RCB winning the tournament. We have talked about WPL season 2. As someone who covered the games, as a fan of the game who has been watching cricket for a long time, how will you sum up WPL season 2? You know, as an RCB fan or as a cricket fan? As a fan, cricket fan. As a cricket fan. So, I loved the atmosphere. I loved how Delhi welcomed WPL. First edition that was happening here, it was Yeah. full attendance in the finals. I mean, a lot of people, more than 25,000 people in the final, Yeah. more than 23,000 in the eliminator. ऐसा ही हाल बाद के मैचेस का था। इनिशियल मैचेस में थोड़े कम लोग थे, उसके बाद जिस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिली है, हैट्स ऑफ टू देम। one thing, nothing against someone like a franchise like a MI, but it's in a way it's good for Indian cricket कि हमारे पास इस बार WPL से एक नया विनर है, that will create a more competition in the league। जो बाकी टीम्स है, यूपी वॉरियर्स, गुजरात जायंट्स, who haven't had good good tournament, Yeah. uh, Yeah.
उनके लिए ये इंस्पिरेशन है बेसिकली व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट ना, ये उनके लिए इंस्पिरेशन है कि बॉस पिछला जो टूर्नामेंट आरसीबी ने खेला था दैट वाजंट रियली गुड, 5 मैच हार के आए थे आप पहले 5 में, तो उसके बाद नेक्स्ट सीजन में ट्रॉफी जीतना, दैट्स इंस्पिरेशनल फॉर द अदर टीम्स एज वेल. तो दिस इज हाउ आई विल सम अप कि एक बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट हुआ है. द सेकंड एडिशन हैज बीन फैंटास्टिक. 2 सिटीज में आपने उसे होस्ट किया. बेंगलुरु में आई वाज टॉकिंग टू सम पीपल हु हैव कवर्ड द बैंगलोर लेग एज वेल. यू नो दे वर टॉकिंग अबाउट बेंगलुरु यू नो लेग की वहां क्राउड किस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, वहां के लोगों ने किस तरीके से इसको वेलकम किया, स्मृति मंदाना के गेम का क्या क्रेज है वहां पर. तो दे वर टॉकिंग अबाउट आरसीबी बीइंग द होस्ट टीम देयर, यू नो कितना ज्यादा फैन अट्रैक्शन आता है. दैट इज अमेजिंग बिकॉज यू नो आरसीबी या आईपीएल बहुत हमने देखा है, हमने हमने भी बचपन से देखा है उनका क्या क्रेज है. बट द वे फैंस आर रिएक्टिंग टू डब्ल्यूपीएल ट्रैवलिंग ऑल ओवर, यू नो पिछली बार महाराष्ट्र में हुआ था, इस बार 2 अलग स्टेट्स में यू नो बैंगलोर, 2 अलग सिटीज में बैंगलोर एंड दिल्ली में हुआ. तो जिस तरीके से इसको यू नो अपनाया जा रहा है, आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट एंड आई जस्ट होप इट बिल्ड्स अप, इट ग्रोज एज मच एज द बीसीसीआई कैन. इसको और ग्रो करे और टीम्स लेकर आए, फाइंड अ विंडो वेयर यू कैन हैव अ लॉन्गर टूर्नामेंट जहाँ पे और कंपटीशन हो, यू नो और एंटरटेनमेंट देखने को मिले और परमुटेशन कॉम्बिनेशंस लगे. एंड really happy for RCB as an RCB fan as well and as a general cricket fan because अगर मैं एज एन एनालिस्ट भी बात करूं तो जितने क्रिकेट फैंस हैं या जो आरसीबी फैंस हैं उनके लिए एक बहुत लंबा वेट रहा है ये. तो एक 17 साल के बाद 16 साल के बाद ट्रॉफी आना, यू नो इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ ग्रेट फीलिंग. So yeah, I mean, kudos to them. Kudos to BCCI for hosting that kind of a tournament, and kudos to the fans who have accepted the WPL in that manner. You know, very well done. Or to all of them. Absolutely, and we already have visuals coming in from Bangalore. People have started celebrating, and I don't think this party is gonna get over until morning. Well, thank you so much, Soumya, for connecting with us. I know you have to go inside to see what's the celebration that the team is doing, and Yeah, also the post-match presentation and press conference. Thank you so much for yeah. connecting with us. We'll see you soon. And before I let Taus Bhai go, Taus Bhai, same question to you. Before we end this live, before we pull on curtains for the WPL season 2, the season as a whole. You were there in the season 1 as we talked in the pre-match. The growth that WPL is showing, how promising is it this tournament? How impressed are you from WPL? And what is the future you see with this tournament and this girl, especially considering that the team who has never won a trophy in the last 17 years has finally won a trophy here? Unbelievable, unthinkable, and a bright future. And we have spoken, Kanav, about this, about the same thing, how this league can grow in future, how more teams can come in, and how more cities can host. Because you saw the crowd. I mean, चाहे वो आरसीबी का हो या डीसी का हो, I mean, it was held in capital of India, Delhi. और आई मीन मुझे लगता है कि टिकट्स की बहुत लोग डिमांड कर रहे होंगे. और ऑब्वियसली मैं मुंबई में हूँ तो मुंबई में पता नहीं चलेगा, बट जब हम थे लास्ट ईयर, रिमेंबर टिकट्स की डिमांड और कितने ओवरफ्लो हो गए थे, लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल रही थी. दैट वाज द ब्यूटी. आई मीन जब फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन में ऐसा हो सकता है, तो इमेजिन इफ यू टेक इट टू डिफरेंट सिटीज, आप टायर 2 सिटीज में भी लेके चले जाओ, तो आप आई मीन आई कैन नॉट इवन इमेजिन वेयर दिस लीग इज गोइंग टू गो. आई मीन ये तो एटलीस्ट पीएसएल, बिग बैश, नेटवेस्ट, 100 ये सबसे बड़ा है यार WPL. तो देर इज नो कंपैरिजन यार. बांग्लादेश प्रीमियर लीग, SLPL कुछ नहीं है इसके सामने. WPL इज द बेस्ट. सो आई थिंक इट हैज अ ब्राइट फ्यूचर. कोई गुंजाइश नहीं, कोई सवाल ही नहीं है. Yeah, absolutely. The promise that this tournament has shown in just 2 years. I mean, it takes at least 4 to 5 years for a league to settle down and then think about how should the future shape up. But then again, in just 2 seasons, WPL has shown immense capabilities, immense good factors rather that it can grow. Promise, so to say. But what a season, yeah! What a win for RCB fans, including me. Yes, as Tausbai said, and.
hopefully I tweeted before the match started that I have a feeling that whoever wins this WPL final will eventually double it up in 2 months time. But then again, Somme is also correct, and I also at the back of my mind know that RCB men's team have certain issues with the kind of team that they have, especially the bowling lineup. But then that's a debate for another day. IPL is coming up. Our focus now shifts from WPL to IPL, from one festival of Indian cricket to the other festival of Indian and world cricket, rather, the Indian Premier League. Kohli takes on MS Dhoni. RCB takes on CSK at the Chidambaram Stadium on 22nd of March. What a IPL this is going to be. And me, Taus Bhai, and all the others from the Cricket Next team will be there to give you live updates about the game happening across the nation. Until then, please take care of yourself. Thank you so much, Taus Bhai, for connecting with us, and thank you so much to all our viewers and to all the RCB fans. Keep the party on. Thank you and good night. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।